Good morning, students. Let's begin with our today's lecture. So, in the previous lecture, we have studied angles in a linear pair. Linear means you have to remember line, angles on a line. Means what? Two angles who have one arm common, two angles which have one arm common, and the other two arms of the angles they form a straight line. Such two angles are called as angles in a linear pair, and they are always supplementary. And vertically opposite angles means what? When two lines intersect each other, then four angles are formed. Out of that, the angles which are opposite to each other, means in front of each other, means their rays, their arms, they form opposite rays. Such angles are called as vertically opposite angle. Means these two are vertically opposite and these two are called vertically opposite. And vertically opposite angles are always congruent to each other. Means ये दो एंगल एक दूसरे को congruent रहेंगे and these two angles will be congruent to each other. Now today we are going to begin with the new topic, interior angles of a polygon. Polygon means a shape having multiple sides, a closed figure having multiple sides. Then how many sides? 3, 4, 5, 6 and so on. Means the general name of a figure, closed figure having 3 or more than 3 sides is a polygon. General name is polygon. Now we have to study the properties of the interior angles. Interior angles means what? The angles which are formed inside that figure, inside that closed figure. So suppose this is a triangle. So in triangle how many angles are formed? 1, 2 and 3. And what is the property of interior angles of a triangle? In the previous class we have studied that the addition of all the three angles of a triangle is always 180 degree. It is always 180 degree. तीनों एंगल के एडिशन का आंसर हमेशा रहता है 180 डिग्री वेयर इन अ ट्राइंगल. Now similarly we have to study the sum of interior angles of different shapes. So let's solve this table. Here number of sides are there in the first column. Means what? How many sides are there in that shape. Then in the second column there is name of the polygon, then the figure of the polygon, then number of triangles and the sum of interior angles. क्या पढ़ना है हमें कि उस शेप के अंदर जितने भी एंगल्स है उनका सम कितना रहेगा, मीन्स उनके एडिशन का आंसर कितना रहता है. सो ट्राइंगल just now we have studied. Here one triangle is there, so 180 degree into 1, 180 degree. तो तीनों एंगल्स का एडिशन कितना रहता है? 180 degree. Now into 1 why we have done that we will come to know in the next example. Now we will increase the sides one by one. So here first we have taken a polygon with 3 sides, 1, 2 and 3. Now we will take a polygon with 4 sides, and a polygon with 4 sides is called as quadrilateral. Lateral means side and quad means 4. So a figure having 4 sides is called as quadrilateral. Now if we join these two opposite vertices of the quadrilateral, then what happens? Quadrilateral is divided into 2 triangles. Okay, this is one triangle and this is the second triangle. So after joining these two vertices we get the number of triangles as 2. Number of triangles are 2. So what will be the sum of all the 4 angles? क्वाड्रिलैटरल में कितने एंगल होते हैं? 4. 1, 2, 3 and 4. So
4 एंगल्स का सम हमें ढूंढना है। उसके लिए हमने क्या किया, क्वाड्रिलैटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया। अब ये ट्राइंगल के 3 एंगल, इनका एडिशन होता है 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज ऑलवेज 180। और ये भी एक ट्राइंगल है तो इसके भी एंगल का एडिशन 180 ही रहेगा। तो दिस 180 प्लस दिस 180 means 180 multiplied by 2. So how you will find the sum of the interior angles? 180 into 2. 2 क्यों? क्योंकि ये जो quadrilateral है ये 2 triangles में डिवाइड हुआ है। So the answer is 360 degree. 18 2s are 36 and this 0. Now we will increase the side. Here 4 sides are there. Here we will take 5 sides. A shape having 5 sides, a closed figure having 5 sides is called as pentagon. It is called as pentagon. Penta means 5. Now join the vertices. So what we get here? 3 triangle. 1, 2 and 3. So number of triangle is 3. Now हर ट्राइंगल के एंगल्स का एडिशन होता है 180 डिग्री। सो दिस 180 डिग्री, दिस 180 डिग्री एंड दिस 180 डिग्री, 3 180 डिग्री मीन्स 180 इंटू 3। सो 18 3s are 54, 18 3s are 54. So the answer is 540 degree. ओके तो यहाँ पे जो ये 5 एंगल है पेंटागन के, इनका सम हमेशा कितना रहेगा, 540 डिग्री। एंड हाउ वी गॉट दिस 540 डिग्री? बाय डिवाइडिंग पेंटागन इनटू 3 ट्राइंगल। और ट्राइंगल का हमें एडिशन मालूम है, हमेशा 180 रहता है। 3 ट्राइंगल है इसलिए 180 इंटू 3, इट इज़ 540 डिग्री। Now the next shape is of 6 sides, and shape having 6 sides is called as hexagon. All these names we have studied in our previous class in 6th standard. Hexa means 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. If we join the vertices, then how many triangles we get? 1, 2, 3, 4. हर ट्राइंगल का सम होता है 180 डिग्री। हर ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सो हेक्सागन के टोटल एंगल्स का सम कितना होगा? 180 मल्टीप्लाई बाय 4. ओके 180 मल्टीप्लाई बाय 4. नाउ यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग दैट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वी आर मल्टीप्लाइंग विथ 180. जितने ट्राइंगल उस शेप में बनते हैं उसको 180 से मल्टीप्लाई करना है। सो हियर वी गेट 4 ट्राइंगल्स, दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई 180 विथ 4. सो 180 इंटू 4, 4 8s are 32, carry 3, 4 1s are 4, 5 6 7, 720 degree. So the sum of 6 angles of a hexagon is always 720 degree. कोई भी टाइप का हेक्सागन हो उसके एंगल्स का सम हमेशा रहेगा 720 डिग्री. नाउ इफ वी टेक हेप्टागन, हेप्टा मीन्स 7 साइड्स, सो दिस इज 7 साइड. तो इसमें ट्राइंगल कितने बने हैं? 5. 1 2 3 4 5. सो व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल एंगल्स? 180 डिग्री इंटू 5. हाउ मच? 900 degree. So basically here we have to learn the table of 18. Now the next one. This is an octagon. Octagon means what? Figure having 8 sides. So triangles how many? 1 2 3 4 5 6. So what is the sum of all the angles? 180 into 6. So 6 8s are 48, 6 1s are 6 plus 4 10, 1080 degree.
So like this we can increase the number of sides, count the triangles and multiply with 180. Now if you observe the shapes, this is a figure having 4 sides. अगर 4 साइड का फिगर है तो उसमें ट्राइंगल कितने बन सकते हैं? 2. 5 साइड का फिगर है तो ट्राइंगल कितने बन सकते हैं? 3. 6 साइड्स का फिगर है तो उसमें ट्राइंगल्स कितने बन सकते हैं? 4. मीन्स शेप में जितने साइड्स है उसमें से अगर हम 2 लेस कर दे, इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द नंबर ऑफ साइड्स, then we will get the number of triangles in that shape. 5 minus 2, 3. 4 minus 2, 2. 6 minus 2, 4. 7 minus 2, 5. 8 minus 2, 6. So what pattern we have observed here? Whatever is the total number of sides of that shape, subtract 2 and you will get the number of triangles. And once you know the number of triangles, multiply it with 180. You will get the sum of the interior angles of that shape. So this is the general formula that we derive. A figure with n sides means if a figure is having n sides, n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रह सकता है, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100. n की जगह कितने भी साइड का फिगर रह सकता है. सो उसमें ट्राइंगल कितने रहेंगे? n माइनस 2. जितनी साइड उसमें से 2 लेस कर देना. मीन्स अगर 12 साइड का फिगर है तो 10 ट्राइंगल रहेंगे. ओके 18 साइड का फिगर है तो -2 मतलब 16 ट्राइंगल्स रहेंगे. एंड हाउ टू फाइंड द इंटीरियर एंगल्स? Sum of interior angles 180 into number of triangles, means 180 into n minus 2. So this is the general formula for finding the sum of interior angles. Okay. So now you know that the sum of measure of interior angles of a polygon is 180 into n माइनस 2. यहाँ पे n क्या है? उस फिगर की टोटल साइड्स. और n माइनस 2 किया तो हमें उस फिगर में कितने ट्राइंगल बन सकते हैं वो मालूम पड़ता है. सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ measure of the interior angles in any polygon. Understood? Thank you.